हेलो गाइस। स्वागत है आपका एसपीयू इंजीनियरिंग इस यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इस सब्जेक्ट के एमपी क्वेश्चंस विद आंसर्स देखने वाले हैं। एक बात बताता हूँ आपको। इधर मैंने लिखा है यूनिट्स आर इंटरचेंज बिकॉज ऑफ न्यू 2024 पैटर्न बट सिलेबस आर सेम। इसका मतलब है कि 2024 पैटर्न में कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की न्यू सब्जेक्ट है। मतलब इसके पहले 2020 पैटर्न में प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम नाम का सब्जेक्ट था। सेम ही सब्जेक्ट है। मतलब वो प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम मतलब कम्युनिकेशन सिस्टम का सब्जेक्ट था। ये भी कम्युनिकेशन का ही सब्जेक्ट है लेकिन सिर्फ नाम चेंज हुआ है और इसके यूनिट्स इंटरचेंज हुए हैं आपस में। सिलेबस सेम है, सिर्फ यूनिट इंटरचेंज हो गए। मतलब यूनिट 3 आगे होगा तो यूनिट 1 वो आगे होगा, यूनिट 1 का यूनिट 3 में चला जाएगा। मतलब सेम यूनिट है, सिर्फ वो इंटरचेंज कर दिए गए। सो ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि जो हमारे आप आईएमपी क्वेश्चन है ना इसके आगे के, सो कुछ यूनिट आपको इंटरचेंज होगी। इधर यूनिट 3 दिखाया होगा, मतलब इंटरचेंज हो गई, इसलिए बोल रहा हूँ। सो चलो स्टार्ट करते हैं। आईएमपी क्वेश्चंस कैसे पढ़ते हैं एक एक को, चलो। सो पहला है, बहुत आईएमपी क्वेश्चंस है। जो आईएमपी क्वेश्चंस आप ये करके गए तो आपको पासिंग प्लस आपका अच्छा स्कोर आएगा। पासिंग तो निकल ही जाएगी लेकिन अच्छे स्कोर की गारंटी मैं देता हूँ अगर आपने आईएमपी क्वेश्चंस आपने किए तो चलो देखते हैं आईएमपी क्वेश्चंस कौन कौन से। डिफाइन मॉड्यूलेशन इंडेक्स एंड डिवीजन रेशियो ऑफ एफएम एंड स्केच एफएम फॉर्म फॉर साइनसोइडल इनपुट। Modulation index. Modulation in FM is generally expressed in terms of modulation index. The modulation index is in the ratio of the frequency division to the modulating frequency. So modulation index का ये फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी डिवीजन अपॉन मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी डिवीजन का साइन है डेल एफ अपॉन मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी एफ एम। So thus the FM signal in general can be expressed as VFM is equal to VC sin omega CT plus MF sin omega MT. उसके बाद डेविएशन रेशियो। द डेविएशन रेशियो इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डिवीजन टू मैक्सिमम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी। डेविएशन रेशियो का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन अपॉन मैक्सिमम मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। मतलब फ्रीक्वेंसी डेविएशन हमने जो देखा डेल एफ, तो डेविएशन रेशियो का फॉर्मूला होता है डेल एफ अपॉन मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी, लेकिन वो भी मैक्सिमम मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो आगे देखते हैं। Thus the deviation ratio is basically the modulation index corresponding to the maximum modulating frequency. So जो हमारा डेविएशन रेशियो है ना वो होता है रेशियो ऑफ दी मैक्सिमम मॉड्यूलेशन इंडेक्स टू दी मैक्सिमम मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो आपने इधर मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फॉर्मूला देखा, वो क्या था? फ्रीक्वेंसी डिवीजन अपॉन मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। सो वही है डेविएशन रेशियो, मतलब मैक्सिमम मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी एंड मॉड्यूलेशन इंडेक्स, इन दोनों का रेशियो। तो आगे देखते हैं। कंपेयर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन विद फेज मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज होती रहती है, वैरी होती रहती है। फेज मॉड्यूलेशन मतलब सिर्फ फेज चेंज होता रहता है। सो द इक्वेशन फॉर एफएम वेव इज बी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा सी टी प्लस एम एफ मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी साइन ओमेगा एम टी, मतलब मॉड्यूलेटिंग वेवलेंथ टी। The equation for phase modulation wave is v is equal to a sin omega c t plus mp sin omega mt. The frequency deviation is linearly proportional to the instantaneous amplitude of the modulating signal. The phase shift of the carrier is linearly proportional to instantaneous amplitude of the modulating signal. Frequency modulation is direct method of producing FM signal. फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मतलब एफएम सिग्नल प्रोड्यूस करने के लिए फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एक डायरेक्ट टेक्निक होती है, डायरेक्ट मेथड होती है। फेज मॉड्यूलेशन इज इनडायरेक्ट मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग एफएम। फेज मॉड्यूलेशन एक इनडायरेक्ट मेथड होती है एफएम को प्रोड्यूस करने की। द मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ एन एफएम सिग्नल इज द रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिवीजन टू द मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। The modulation index is proportional to the maximum amplitude of the modulating signal. To have a better quality of transmission and distribution of higher audio frequencies, pre-MCC and DMCC circuits are used. The amount of frequency shift produced by a phase modulator increases with the modulating frequency. Hence, an audio equalizer is required to compensate this. Amplitude of the FM wave is constant. Amplitude of the FM wave is constant. Noise is better suppressed in FM system is compared to PM system. Noise limit is inferior to that of FM. Uh, FM is mainly used for the FM broadcasting used for entertainment purpose. फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के एग्जांपल है एफएम ब्रॉडकास्टिंग एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए यूज होता है। और फेज मॉड्यूलेशन यूज होता है मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम। मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम में फेज मॉड्यूलेशन यूज होता है। आगे देखते हैं। एक्सप्लेन एफएम जनरेशन बाय आर्मस्ट्रांग मेथड विद नीड ब्लॉक डायग्राम। सो एक मिनट।
FM generation using Armstrong method is achieved by following steps: generation of PM wave, generation of narrowband frequency FM from PM wave, generation of wideband frequency wave from narrowband frequency modulation wave. सो एक कुछ देख सकते हैं आपका ब्लॉक डायग्राम है, सिर्फ ब्लॉक डायग्राम लिखने का, उसके बाद एक सारा एक्सप्लेनेशन करने का। इधर हमें मॉडुलेटिंग सिग्नल दिया है, मॉडल बैलेंस मॉडुलेटेड, उसके बाद फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर लगाया है, उसके बाद डाउन कन्वर्टर लगाया है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर लगाया है, उसके बाद सिर्फ मॉडुलेटिंग सिग्नल मिलता है। सो हम एक ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आईएमपी को इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपको ये डायग्राम देख के करने का है। अब आगे देखते हैं। Explain pre-emphasis in FM with circuit diagram frequency response. Pre-emphasis, it has been observed that FM, the noise has a greater effect on the higher modulating frequency. This effect can be reduced by increasing the value of modulation index for higher modulating frequencies. This can be done by increasing the deviation and can be increased by increasing the amplitude of modulating signal for the modulating signals of higher frequencies. Thus, if we boost the amplitude of higher frequency modulating signals artificially, then it will be possible to improve the noise immunity at higher modulating frequencies. The artificial boosting of higher modulating frequencies is called as pre-emphasis. Circuit diagram and modulating AF signals. Pre-emphasis circuit is basically a high-pass filter FM modulator. Pre-emphasis is FM output. The modulating F signal is passed through a high-pass RC filter before applying it to the FM modulator. As FM increases, reactance of C decreases and modulating voltage applied to FM modulator goes on increasing. The frequency response characteristics of the RC high-pass network. The boosting is done according to this pre-arranged curve. The amount of pre-emphasis in US FM transmission and sound transmission in TV has been standardized at 75 microseconds. The pre-emphasis circuit is basically a high-pass filter. The 50 seconds indicates the time constant of the RC circuit for the pre-emphasis. The pre-emphasis is carried out the transmitter. The corner frequency for the RC high-pass network is 2122 Hz. The pre-emphasis circuit is used at the transmitter. सो कुछ प्रीएम्प्सिव कैरेक्टरिस्टिक्स है, हमारा आउटपुट है और आउटपुट स्लो पे। अब आगे देखते हैं। क्लासिफाई पीएम जनरेशन मेथड्स। सो ये पीएम जनरेशन मेथड्स के कुछ उनका डिफरेंस है। FM signal can be generated using the direction frequency modulation. A direct FM modulation can be achieved by direct feeding the message into the input of the voltage control oscillator. For the indirect FM modulation, the message signal is integrated into generate a phase modulated signal. Do comparison between pre-emphasis and de-emphasis FM. So a FM and pre-emphasis FM and de-emphasis FM का कुछ डिफरेंस लिखना है। pre-emphasis FM और de-emphasis FM का कुछ आप डिफरेंस देख सकते हैं इधर। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो बूस्ट हायर फ्रीक्वेंसीज बिफोर ट्रांसमिशन टू मिटिगेट नॉइज इफेक्ट ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। हायर फ्रीक्वेंसीज को बूस्ट करता है ट्रांसमिशन के पहले। डीएमसीएस क्या करता है, हायर फ्रीक्वेंसीज को कम करता है एट द रिसीवर के पास, मतलब रिसीवर के पास हायर फ्रीक्वेंसीज को रिड्यूस करता है तो सिग्नल को बैलेंस करने के लिए और ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी को फिर से पाने के लिए। इम्प्लीमेंटेशन क्या है इसका, अप्लाइड एंड ट्रांसमीटर एंड बिफोर मॉड्यूलेशन, मतलब ट्रांसमीटर के अप्लाई होता है फ्रीक्वेंसीज मॉड्यूलेशन के पहले, रिसीवर पे अप्लाई होता है मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन के बाद, मतलब डीमॉड्यूलेशन के बाद जो हमारा ओरिजिनल सिग्नल हमको मिलता है ना, उसके टाइम यूज होता है डीएमसीएस। अब आगे देखते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। इंक्रीजेस एम्पलीट्यूड ऑफ हायर फ्रीक्वेंसीज रिलेटेड टू लोअर फ्रीक्वेंसीज। हायर फ्रीक्वेंसीज के को इंक्रीज करता है रिलेटेड टू लोअर फ्रीक्वेंसीज। reduces amplitude of higher frequencies related to lower frequencies. एम्पलीट्यूड को रिड्यूस करता है हायर फ्रीक्वेंसीज के रिलेटेड टू लोअर फ्रीक्वेंसीज। अब इसका सर्किटरी देखते हैं। यूटिलाइजेस हाई पास फिल्टर इन द ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर में हाई पास फिल्टर को यूटिलाइज करता है। यूटिलाइजेस अ कॉम्प्लीमेंट्री लो पास फिल्टर इन द रिसीवर। लो पास फिल्टर को यूटिलाइज करता है डीएमसीएस। पर्पस क्या है इसका, कॉम्पनसेट्स फॉर द नेचुरल अटेंशन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी signals and reduce noise. Counteracts the effects of pre-emphasis, restoring the signal to its original spectrum. आगे देखते हैं characteristics. Introduces a deliberate boost to higher frequencies. Mitigates the effects of frequency dependent noise introduced during transmission. Formula इसका देख सकते हैं आप equation S out T is equal to sin sin T into G, where G is a constant gain for higher frequencies. S out T is equal to S in T into H, where H is the constant attenuation for higher frequencies. Frequency range क्या है इसका, typically boost frequencies above 1 kHz, usually attenuates frequency above 1 kHz. Application commonly used in FM broadcasting and audio transmission.
कॉमन यूज होता है एफएम ब्रॉडकास्टिंग एंड ऑडियो ट्रांसमिशन में, essentially in FM receivers to restore the original signal spectrum. तो essentially एफएम रिसीवर को रिस्टोर करने के लिए ओरिजिनल सिग्नल स्पेक्ट्रम। आगे देखते हैं स्केच फेज मॉड्यूलेशन वेवफॉर्म फॉर साइनसोइडल इनपुट सिग्नल, enlist advantage and disadvantages of फेज मॉड्यूलेशन। सो ये फर्स्ट फेज मॉड्यूलेशन का डायग्राम है, आप इधर देख सकते हैं हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है कुछ उसके बाद एक फेज मॉड्यूलेशन मतलब फेज में कैसा इसके सिग्नल आ रहे हैं, इसकी वेवफॉर्म है, सिग्नल की वेवफॉर्म है फेज मॉड्यूलेशन की, आप देख सकते हैं। सो आगे देखते हैं इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को हम। सो एडवांटेजेस क्या है इसका, इम्प्रूव नॉइज परफॉर्मेंस है, PM exhibits better noise performance compared to amplitude modulation or frequency modulation. This is because phase modulation signals maintain a constant amplitude, making them less susceptible amplitude-based noise. Differentiate bandwidth uses. Phase modulation can be more bandwidth efficient than some other modulation schemes, like amplitude modulation. It can transmit information without significantly widening the bandwidth, making it suitable for certain communication systems where bandwidth conservation is crucial. Simple demodulation process है, demodulating a phase modulation signal can be simpler compared to some other modulation techniques, especially when using coherent demodulation techniques. सो डिमॉड्यूलेशन क्या करता है, हमारा ओरिजिनल सिग्नल को रिटर्न करता है। मॉड्यूलेशन क्या करता है कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को प्रोड्यूस करता है और डिमॉड्यूलेशन ओरिजिनल सिग्नल को फिर से देता है हमें। सो डिसएडवांटेजेस क्या है इसके, सेंसिटिव टू फेज डिस्टॉर्शंस, फेज मॉड्यूलेशन सिग्नल्स आर हाईली सेंसिटिव टू फेज डिस्टॉर्शंस caused by transmission impairments or environmental factors. Any phase shift in the signal can result in significant errors in the modulation, leading to signal degradation. Complexity in implementation. In some cases, implementing phase modulation systems with high accuracy and precision can be more complex compared to other modulation techniques, especially in systems requiring high modulation indices or stringent phase accuracy. Limited use in commercial application. Commercial application में बहुत कम यूज होता है phase modulation. While phase modulation has advantages, is used in commercial applications like broadcast systems. Broadcast system यूज होता है broadcast system में यूज होता है phase modulation signal is limited compared to the other modulation schemes like amplitude modulation or frequency modulation. It is commonly used in specialized applications such as digital communication systems and certain types of radar. आगे देखते हैं नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के बीच का डिफरेंस। सो देखते हैं हमें। सो नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इसके बीच का डिफरेंस। मॉड्यूलेशन इंडेक्स, लोअर मॉड्यूलेशन इंडेक्स टिपिकली लेस देन 1, हायर मॉड्यूलेशन इंडेक्स टिपिकली ग्रेटर देन 1। सो पहला डिफरेंस तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है, जो लोअर मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है ना वो टिपिकली लेस देन 1 होता है और हायर मॉड्यूलेशन इंडेक्स है टिपिकली ग्रेटर देन 1 होता है। इक्वेशन इसका क्या है, s of t is equal to ac cos 2 pi fct plus bmt, s of t is equal to ac cos 2 pi fct plus bfm of t dt। स्पेक्ट्रम concentrated around the carrier frequency, ये concentrated around होता है carrier frequency और spectrum spreads wider around the carrier frequency। bandwidth, bandwidth occupies a smaller bandwidth range, narrow band fm smaller bandwidth range को occupies करता है, wide band fm large bandwidth range को occupies करता है। noise suppression offers better noise suppression due to narrowband characteristics, narrowband characteristics की वजह से better noise suppression को offer करता है। more susceptible to noise due to the wider bandwidth, more susceptible होता है noise due to wider bandwidth। maximum modulation index कितना है, typically cap at 1 for narrowband frequency modulation, can exceed 1 for wideband frequency modulation। अब आगे देखते हैं रेंज ऑफ मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी। मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी की रेंज कितनी तक है, सो लिमिटेड रेंज ऑफ मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी, मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी की लिमिटेड रेंज है, कैन अकोमोडेट अ वाइड रेंज ऑफ मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसीज। मैक्सिमम डिविएशन, स्मॉलर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डिविएशन इनका, इनका लार्ज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डिविएशन है। ट्रांसमिशन क्वालिटी सुटेबल फॉर कम्युनिकेशन ओवर शॉर्टर डिस्टेंसेस, सुटेबल है शॉर्टर डिस्टेंस के लिए कम्युनिकेट करने के लिए। मतलब हमने इधर देखा कि जो हमारा नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है ना, इसका मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या है, स्मॉलर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ड्यूरेशन है इसका, और इसका लार्जर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ड्यूरेशन है। मतलब जो हमारा नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है इसका मैक्सिमम ड्यूरेशन स्मॉलर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ड्यूरेशन है और वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का लार्जर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ड्यूरेशन है। और ट्रांसमिशन क्वालिटी क्या है, सुटेबल फॉर कम्युनिकेशन ओवर शॉर्ट डिस्टेंस, सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस से कवर करता है। और वाइड बैंड इसके नाम में वाइड है, मतलब ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है। सुटेबल फॉर ब्रॉडकास्टिंग एंड वाइडर कवरेज,
एप्लीकेशन इसके टू वे रेडियो, वॉकी टॉकीज, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन।